हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। आवाज़। तो भाई आज नई गेम खेलते हैं ना। लास्ट टाइम हमने क्या कहते हैं अंटिल डॉन ख़त्म करी थी। तो आज खेलते हैं व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच। इसके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। काफ़ी इसकी स्टोरी की काफ़ी तारीफ़ें हैं। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो देखते हैं भाई खेल के। वैसी गेम है ये, एक्सप्लोरेशन और मतलब इनविंसिबल जो मैंने खेली थी ना, द इनविंसिबल, वैसी है ये। गेम कैप्चर। इसकी स्टोरी ऐसी है। गेम की साउंड तेज ना आ रही हो बस। अच्छा, चालू भी हो गई है, वाह भाई। सेटिंग कहाँ? अल्ट्रा भाई, ऑटो डेक्ट में अल्ट्रा इसने करा है। लैग ना हो बस। चलो, और तो कुछ नहीं है। एक मिनट, स्ट्रीम पे दिख रही है ना गेम? एक मिनट ये। तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं भी पहली बार ही खेल रहा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि इसकी कुछ फैमिली की स्टोरी है शायद। मैंने समरी पढ़ी थी जब, कुछ ऐसे लिखा था कि अनकवर मिस्ट्रीज ऑफ एडिथ फिंच फैमिली ऐसे करके। तो देखते हैं भाई, ये ट्री सी बना तो रखी है इन्होंने, पता नहीं। देखते हैं। A lot of this isn't going to make sense to you, and डायलॉग्स I'm भी हैं, sorry ठीक है। about that. I'm just going to start at the beginning with the house. अरे ये क्या ट्रांजिशन था? Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. हम्म। My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. अच्छा जी। इसके भाई का नाम मिल्टन है, क्योंकि डिसपियर हो रखा है। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा लग रही है शायद, पर ठीक ही है। पता है, मेरे को इसको माउस कीबोर्ड पे खेलने का मन कर रहा था क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है गेम। पर फिर मैंने देखा
कमेंट वमेंट में तो लोग बोल रहे I lived कंट्रोलर पे here खेलो, until I was कंट्रोलर पे ज़्यादा 11, मजे। but I wasn't allowed inside half the rooms. वो घर है? वो कैसा घर है भाई? ऐसा लग रहा है फोर्टनाइट में किसी ने वो बना दिया हो, टावर। भाई इन्होंने हाथ बना रखा, मैं बटन कौन सा दबाऊं भाई? तुमने हाथ बना दिया। मैं तो कैसे आरटी दबाया, वो आरटी से हो रहा है ये। Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. क्या निकालना है क्या इसमें से? I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. एक और भाई है इसका, ल्यूइस। In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. मुझे कहाँ जाना चाहिए? हाथ भी चलता हूँ जरा। बाइक कितनी धीरे चल रही है। No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. मुझे नीचे देख लेना चाहिए था क्या, या शायद दोनों रास्ते ही कनेक्ट होंगे आगे आगे। ब्रिज सा कनेक्ट कर रखा है ना वो। The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. आ गए भाई घर पे। The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. भाई ये घर अजीब है बड़ा। यहाँ पे ये नॉर्मल सा घर बना रखा है, और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बना रखा है, और एक वो टावर सा खींच दिया अलग से वो। As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. मिसिंग पोस्टर बिखरे पड़े हैं भाई सारे इसके भाई के। अबैंडन्ड है शायद हाउस। Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. किसकी चाबी उठा के ले आई भाई फिर? तिजोरी पैसे लेने आई है। Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. भाई मुझे तो हॉन्टेड हाउस लग रहा है ये, सही बताऊं तो। किताबें बहुत रखी हैं।
यहाँ से जाना है। हेलो सोना, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे चल रही है असासिन क्रीड ब्लैक फ्लैग? अभी आता हूँ, कभी कभी देखता हूँ। बढ़िया गेम है। मैंने उसका पुराना वर्जन खेल रखा है। मैंने रीसिंग नहीं खेली अभी तक। रीसिंग मेरे पीछे वैसे चलेगी भी नहीं, इसलिए खेल खेल भी नहीं पाऊंगा अभी। पर बढ़िया गेम है। आई वॉन्ट टू प्ले दिस गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, बढ़िया गेम है ये। मैंने भी इसके बारे में सुना था काफ़ी, तभी मैंने फिर लिया इसको। अच्छा, 1 मिनट, गेट पे कोई आया, मैं खोल के आया।
उफ, चलो भाई कंटिन्यू करें। एक काम आ गया था। कब ली उसने? अब ये तो नहीं बताया उसने मुझे, पर ये कि सेल पे ली थी उसने बताया था। वही है, सेल पे इसका काफ़ी डिस्काउंट आ जाता है। अभी मेरे ख्याल से ये महंगी चल रही है ना, नॉर्मल प्राइस का महंगा ही है। सेल पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है इस पे। नेक्स्ट सेल आ जाएगी उसमें, विंटर, अभी मेरे ख्याल से विंटर सेल आएगी, उसमें मिल जाएगी बढ़िया। चलो भाई। तो नहीं, ये मेरे ख्याल से इससे घुसेगी नीचे से। आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा ये विंड चाइम। अरे यार ये फर्स्ट पर्सन ना कंट्रोलर में मेरे को पता नहीं अच्छा नहीं लगता। जैसे माउस में मूवमेंट हो सकती है इतना आराम से, कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ा कंट्रोलर पे खेलता। Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. डॉगी डोर बोलते हैं ना इसको। हम्म। इसके दोनों भाई तो मिसिंग थे, पर इसके मम्मी पापा कहाँ गए वो उसका नहीं बताया ना अभी इसने। The power had been turned off the night we left. जनरेटर भी नहीं है। For the first time in years, जनवरी 2010, ये शायद पुराना कैलेंडर है। I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. एडिथ, एडी, डॉन ल्यूइस। एक मिनट, ये क्या है? ल्यूइस मिल्टन नहीं है इस फोटो में कहीं है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं, नहीं 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 नहीं। मिल्टन और ल्यूइस शायद दोनों अलग ही हैं, पर दोनों इसके भाई हैं, पर मिल्टन की फोटो नहीं है इसमें। और एडी और डॉन क्या दादी हैं इसकी? नानी, नानी दादी। ल्यूइस फिंच है। अच्छा ल्यूइस की डेथ हो गई थी क्या? तो मिल्टन लापता हो गया था और शायद ल्यूइस की डेथ हो गई थी। मुझे लगा दोनों ही लापता है। Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. चाइनीज। क्या हालत कर रखी है भाई घर की। Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. ये सारी कैन मछली की। The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. हुआ क्या था भाई? My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. अच्छा ईडी नाम है उसका, मैं एडी बोल रहा हूँ। मैं वही जरूर टेकन, टेकन वाले एडी की याद आ गई मेरे को। ईडी नाम है।
Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. भाई वैसे बात है, ये लोग किताबों के शौकीन थे शायद. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. सैंग कहाँ बना रखा था भाई घर? ओ बेसमेंट. बेसमेंट में भाई अभी जाना सही नहीं रहेगा शायद. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ग्रेट ग्रैंडपा कहाँ की बात हो रही है भाई ये? और यहाँ पे चाबी लग रही है, मेरे ख्याल से मेरे पे जो चाबी है वो बेसमेंट की चाबी है. तो मैं पहले ऊपर घूम के आ जाऊँ फिर. नीचे तो देख लिया ना मैंने सब. ठीक है. सील, अरे सील कर रखा है भाई ये. ऊपर देखते हैं पहले. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. हैं? पीपल. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. टैन ही निकल गई हैं भाई, इतना पुराना घर है शायद. अरे भाई डरा दिया मेरे को इसने. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. ये बढ़िया कमरा बना रखा है. यहाँ थोड़ी एक्वा लाइटिंग लगवा दो भाई, एकदम ऐसे ही लगेगा कि अगल बगल में पानी है. लाइट अच्छे बाहर से आ रही है. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping अरे secrets. ये चाबी इसमें लग गई, तो बेसमेंट की चाबी नहीं है मेरे पे. क्या सीन है? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको. वापस नहीं आ सकता मैं. ये गलत बात है. अरे यार मेरे ख्याल से यही कंटिन्यूएशन है और मैं कंटिन्यूएशन पे आ गया. मेरे को एक्सप्लोर करना था और भी कमरे. From the paintings अरे on the wall, यार. it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. ये क्या है भाई? प्रिंसेस रूम. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being Molly. inside for the first time, I अरे felt like मौली I'd का stepped कमरा है behind a ये. painting. मैं यहीं से तो पिक कर रहा था. हाँ मौली का. भाई बाहर से पिक करने में इतना बड़ा लग रहा था कमरा, अंदर आया तो इतना छोटा सा. वो फिश आई इफेक्ट था शायद. फिश आई बोलते हैं ना उसको. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. What do you mean by gerbil? एक मिनट. A burrowing mouse-like rodent that is specially adapted to living in arid conditions.
अच्छा कोई चूहा हुआ पाल रखा था इन्होंने मतलब। हाँ ये तभी ये रखा है ना ऊपर। भाई नज़ारा तो बढ़िया है। भाई इनका घर कहाँ पे बना हुआ है भाई? समुद्र के बीच में? आइलैंड वाइलैंड खरीद रखा है क्या इन्होंने? मॉली फिंच। December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, अब so कहाँ आ I गया मैं? looked around for something to eat. अच्छा ये क्या बोलते हैं, मॉली की मेमोरी है क्या अब ये? पास्ट में आ गया शायद। My Halloween candy was हाँ मॉली है। all gone. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. छी भाई, चूहे के लिए खाना रखा था वही खा गई। ये भी ठीक है। अरे भाई कितनी छोटी सी लग रही है भाई ये। शीशा भी नहीं, शीशे भी नहीं दिख रहा। I kept eating and eating. क्या करेगी? हैं? ये टूथपेस्ट खा गई? ये कैसे भूख है भाई? टूथपेस्ट खा गई? ये भी पी ले फिर। हाँ नहीं तो ये क्या है? I ate a lot of things that night. भाई ये तेरे बाथरूम में उगी पड़ी है भाई। उगी पड़ी है, पता नहीं क्या है रख रखा। Then I heard chirping outside my window. चली भी पाल रखी है। I thought about नहीं 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 नहीं, पागल है क्या? It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. ओ And suddenly, I बिल्ली was a बन गई? cat. हाँ? क्या चल रहा है भाई ये? I tried to be quiet, but the bird was really scared. सपना देख रही है क्या सीन है? The babies were all gone. तो ये क्या कर रही है फिर यहाँ पे? I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up.
कॉबल्टर अब खा गई भाई। And suddenly, पर ये I was an बिल्ली owl. कैसे बन रखी है? First, all I Wow. heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा मैं। Rabbits. अच्छा पकड़ना है। I imagined his face looking up and seeing mine through my अरे claws. भाई I भाई- swallowed him up, and I didn't chew one bit. भाई Then क्या है ये I flew off मौली? to find something bigger. और आउल इतने बड़े रैबिट को कैसे कैसे सटक सकता है भाई एक बारी में? A mama rabbit. मोमा रैबिट तो बच्चे थे वो। She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. वाह भाई पता नहीं क्या चल रहा है इस गेम में। अरे अच्छा शायद ऐसे गिर गिर के पानी में जाना है। I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. काफी बड़ी मछली I है भाई। wanted fat, juicy seals. सील्स I tore off her flipper, and it tasted really good. भाई सील इस पानी में क्या कर रही है? ये वो है क्या? अंटार्कटिक ओशन है क्या? Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened क्या my बन गई? eyes, everything had changed. ये क्या है? ये क्या है? ऑक्टोपस? सांप? क्या है ये? Now I was a monster, and I smelled अच्छा people. मॉन्स्टर। वही सोचूं ना ही ये सांप लग रहा है ना ही ऑक्टोपस के टेंटिकल इतने लंबे होते हैं इतने मोटे होते हैं। पीपल लोग कहाँ स्मेल लिया? I was big, but I moved real quiet. भाई साहब I wanted to stop, but also I didn't. रंग क्या भाई वही? His belly was rusty. His belly was rusty. सेलर बचाया शायद।
danger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. हैं? जब वॉशरूम से निकली, और ये इसका ही लग रहा है मेरे को। इसका ही है ना? I got closer and closer. हाँ, मौली। All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my Oh. breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know. पता नहीं भाई इसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, क्या सीन है? Delicious. I'm not sure if I believed all of that, Molly. but I'm sure Edie would have. संजय लिखा है भाई एक में, संजय। संजय कौन है भाई? 1937 to 1947 मौली। ज़्यादा जी नहीं मौली, मतलब सिर्फ 10 साल। एडिट कहाँ है? एडिट 1999। अच्छा, सबसे लेटेस्ट एंट्री एडिट ही है अपनी फैमिली की। तो ये अपनी शायद 3 में इसके पास्ट में जो लोग थे उनकी स्टोरी देखेगी। अभी मौली की देखी, अब शायद बारबरा की बारी है। देखें भाई ज़रा। I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. बिल्ली वे बाहर आ गई। अच्छा, बाहर तो शायद मैं दूसरे कमरों में जाऊंगा ना। This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. ग्रेट ग्रैंडमा। We got along, and it was a good place to hide from my mom. क्या क्या रख रखा है ये? चिड़ियाओं की फोटो रख रखी है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसने पाल रखे होंगे, फिर जब वो मरे तो उनकी फोटो फ्रेम उसने उन्हीं पिंजड़ों में छोड़ दी। इसने लगा रखे Edie है ना knit me ये। a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. ये लगा रखी है ना, जरपी 1992 1995, जरपी जूनियर। Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. ये ईडी को मेमोरियलाइज करना पसंद था चीज़ों को शायद, क्योंकि इसने अपनी चिड़ियाओं को भी कर रखा है। Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. क्या बस?
Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. ओ भाई Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin 1880 to 1937। तो मॉली ओडिन की बच्ची थी क्या? नहीं, पता नहीं। ईडी वाइफ थी ना ओडिन की? नहीं, ये क्या? ईडी का उसने 1917 लिख रखा है, ओडिन तो 1880 का। हाँ नहीं, वाइफ ही थी शायद तो। ऑक्सीजन। Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. 72-year-old woman refuses to evacuate because of a little forest fire. Built 1937, Owen, एक मिनट क्या लिखा है ये? Aaron Finch. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Sven. अच्छा Sven नाम लिखा है भाई वो। इसने बनाया शायद घर। Dragon kills Finch. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. अच्छा, तो वो जो फोटो दिख रही थी वो फ्रिज पे जो लगी हुई थी, वो एक इसकी मम्मी थी और एक इसकी ग्रेट ग्रैंड माँ थी, क्योंकि ईडी इसकी ग्रेट ग्रैंड माँ है ना। ग्रैंड माँ नहीं है ना, ग्रेट ग्रैंड माँ शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ये क्या है? अरे भाई, ये कैसा फ्लोरिंग है भाई? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. पिंक बाथरूम, क्या बात है। चेयर रख रखी है बाथटब में। It was a pretty big trace. भाई पर चलने में कितना बढ़िया लगता होगा इसमें।
भाई चाबी चाबी से काफी चीजें खुल रही हैं वैसे। देयर इज अ सीक्रेट इन दिस बाथरूम। तो यहाँ से मैं There's a शायद secret मेमोरी in this रिलीव करूँगा। bathroom. शायद उसमें है, वो ग्रीन वाले उसमें। It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. अच्छा, It's hidden in this book. भाई बड़ी जल्दी है इसको अंदर जाने की। मैं तो बटन भी नहीं Sven gave दबाया। Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. तो यहाँ पे वो फोटो बनाता था शायद। मिल्टन। अरे भाई ये क्यों बांध रखा है भाई? I knew Grandpa Sam had a twin, ग्रैंडपा सैम, सैम और कैल्विन। कॉल्विन बोलते हैं शायद, कॉल्विन। and that he never talked about him. कोट सैम। भाई कैसे कैसे तो घर होते हैं भाई बाहर के, एकदम बढ़िया कस्टम। यहाँ इंडिया वाले घर जैसे नहीं। I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. क्या बात है, उसने पैर फ्रैक्चर कर रखा है अपना शायद। My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. देखता हूँ कितनी ऊपर तक At Barbara's झूलेगा funeral, ये। we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. टैनी को छू के रहना है भाई आज, ऊपर जो दिख रही है। Sam, Calvin, dinner's अरे ready. यार, Coming. But that day, he finally made पहुंच up जा his भाई, mind पहुंच to जा। do it. शायद पहुंच गया। I told him going around was impossible. हाँ पहुंच तो गया भाई, और देखो कितना ऊपर जाएगा। Maybe if I hadn't said that, अरे भाई 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 भाई, चल रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई भाई, टैनी ना टूट जाए। Calvin, I'm not gonna tell you again. अरे रुक maybe जा if the रुक जा wind रुक hadn't जा। picked up, रुकना कैसे? उतर जा, अरे उतर जा भाई, तेरी मम्मी बुला रही है भाई खाना खाने के लिए, उतर जा। अरे चच्चा उतर जा। अरे यार एक तो बटन दबा। नहीं उतरना क्या, क्या सीन है? मत उतर।
चल तेरे को झुलाई दूँ आज। चल 360 मारना आज तेरे को, मैं भी देखूँ। Then maybe he'd still be here. But I doubt it. अच्छा झूलना ही है भाई, ये बोल रहा है। I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. 360 चल भाई, चल 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 360 मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे। अरे मार दिया मार दिया मार दिया। अरे 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 क्या बात है, अरे 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 क्या बात है। The day he और made भाई, his mind fly. अरे And he did. भाई ये मस्त था भाई। Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. कैल्विन 1950 to 1961, कहीं ऐसा तो नहीं है सही में ऐसे झूलते झूलते ये पानी में कूद गया? एक मिनट भाई, गर्मी लग रही है। चलो। After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. ओह भाई, क्या घर बना रखा है भाई, क्या है ये? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? एक मिनट यहाँ देख लूँ पहला। अरे भाई 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 भाई, ये क्या रख रखा? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. जब बारबरा की बारी भाई, बारबरा के कमरे में आ गए शायद। बारबरा Barbara Finch now showing My Friend Bigfoot। इसकी मूवी वूवी निकाल ली थी क्या इसने? डॉल वॉल भी बन रखी है भाई इसकी। I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Dreadful stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now it's Typical 16, Hollywood she was scream, all bhai. washed up, a has-been.
But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. अरे भाई Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sing. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. भाई पूरा कॉमिक चल रहा है भाई Box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ओह एक मिनट ये चीज नीचे जब मैंने मेन एंट्रेंस से एंट्री करी थी घर के अंदर तो जो बेसमेंट का दरवाजा था वहां पे भी ये रखा हुआ था तो मतलब मैं बेसमेंट का दरवाजा अगर मुझे खोलना है तो मुझे वो चाबी ऐसी पूरी घुमा के वो चाबी उसमें से निकलेगी जिससे बेसमेंट खुलेगा ऐसी बात है भाई अरे भाई मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बड़ा यूनिक बना रखा है इन्होंने She found Rick's crutch and imagined the worst. What in the borderland is this भाई borderland के ग्राफिक्स लग रहे हैं क्या बात है ये मार खून The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. What मारूं भाई ये क्या रख रखा भाई खून है इस पे The old fridge rattled and grew still. अरे भाई मार इसको Rick? अच्छा हुआ मैंने Barb, मारा relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him मुंह out, पे but she मुंह पे दरवाजा मारा भाई to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. चलो भाई फिर से डंडा मारना पड़ेगा किसी के
तो पूरा हैलोवीन थीम लग रहा है भाई। वॉल्टर फिंच। बच्चा होगा तो नहीं मारूंगा, बच्चे के नहीं मारूंगा। Vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. I returned, saw the bookman, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Another way. पे 1 मिनट, ये वो वाला कमरा है, वो मछली वाला। She played her part beautifully. मौली कमरा में। She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. वॉल्टर कहाँ है फिर? Holly's door. Years. The hinges grow. ये कौन है भाई? मार, डंडा मार। He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. भाई ये कोई इसका पति वती ना निकल, नहीं पति का तो भाई, इसका पति तो वैसे चलता है ना अपने ये डंडे से। इसका पति तो नहीं होगा, ये कौन है पता नहीं। The hookman had vanished. She listened for his बहुत breathing, बढ़िया। but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. दो अबे वाह। Monsters had come to surprise her. अब मैं सबका डंडे मारने लग रहा हूँ भाई। Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to एक मिनट, happen. ये क्या है? She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. ये क्या I सीन wasn't है? there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. अरे भाई। Now that's what I call a real eerie tale.
तगड़ा भाई। Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. मॉली, फिर बारबरा, फिर कैल्विन, सैम, वॉल्टर। जब वॉल्टर की भी स्टोरी पता लगेगी अभी। ईडी की रह गई है स्टोरी, ग्रेगरी, गस, डॉन, ल्यूइस मिल्टन। बारबरा। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ जाना है? वापस जाना है क्या? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. हाँ, It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. अब मिलेगी ना बेसमेंट की। Edie's father, Odin, built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. बारबरा। ओ, ऊपर भी है और कुछ। ऊपर देखूं फिर पहला। Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. बहुत बढ़िया। नीचे चलता हूँ फिर। बेसमेंट खोलते हैं। एक मिनट, इधर भी है कुछ। कैल्विन। My grandpa कैल्विन Sam हमारा। spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. ग्रेगरी। As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. इसका भी वॉशरूम ये है, पिंक। I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. हाँ ठीक है, देख लूँगा, रुक जा। ये तो मौली का कमरा है। हाँ, तो यहाँ तो देख लिया फिर मैंने सब। बेसमेंट ही खोलते हैं। इधर था बेसमेंट। अंधेरा अंधेरा हो रहा है क्या? इतना अंधेरा तो नहीं था जब मैं आया था इसमें। मिल गई। स्नूकर टेबल रख रखी है। Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. टेटनस शॉट? अच्छा, टेटनस। अच्छा, इसने शायद पहले गई होगी तो इसको ये लकड़ी वकड़ी लग गई होगी, तो उससे इसको टेटनस का इंजेक्शन लगा होगा फिर। ये लकड़ी वकड़ी काफ़ी रखी है भाई यहाँ पे, कटी हुई।
कारपेंटर था क्या इनकी फैमिली में कोई? स्वेन लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वेन था क्या? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. तो भाई अंधेरा, भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember Oh, asking Mom once yeah. about where Walter had gone. KFC है भाई ये तो। She said after Barbara Secret died, bunker. he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. वॉल्टर, वॉल्टर तो उसका ही लड़का था बारबरा का। इसकी स्टोरी पता लगी। Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. ये क्या खा रहा है भाई? I always expected to be dead tomorrow. Peaches. But if you wait long enough, you get used to anything. भूकंप किस लिए आ रहा है? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. तो भाई वॉल्टर ना जब बारबरा के साथ सीन हुआ था तो ये यहाँ आके रहने लग गया शायद। And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. भाई डेली सेम चीज खा रहा है It's बंदा। been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. ठीक है, यहाँ से लीव करना है। यहाँ क्या है फिर? मैं जा ही नहीं पा रहा। I know it's out there somewhere. क्या? Whatever killed Barbara. अच्छा, बारबरा को मारा किसने, वो तो यही समझ नहीं आ रहा भाई। वो मॉन्स्टर्स इतने सारे रियल थे वो। And Molly. मॉली का भी सीन ही अलग था भाई। मॉली तो अपना अलग से कुछ ना कुछ बनने में लगी पड़ी। And Calvin. काल्विन तो यही नहीं है। Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. यहाँ से निकला।
Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. बहुत धीरे चल रहा है भाई, I'm बहुत going to धीरे. appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. अबे ट्रेन से मरा ये. अरे भाई, जहाँ वो पटरी थी भाई, वो Walter उसने जहाँ died when I was खोदा. 6. I can't believe my mom never told me he was down here. वाह. I'm sure my mom was trying to protect me. जे भी इसमें जाना. किताबें पहले तो नहीं थी शायद. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. भाई ये सारा खाना उसका ही होगा, वॉल्टर का, जो डेली खाते रहता था. पैकेज्ड फूड. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of मैं भी us पटरी पे आ left, गया. or maybe 2. भाई इस गेम में एक्सप्लोरेशन का भी टैग था, पर पता नहीं मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर ही नहीं I पाया. thought it was time I heard the stories for एक्सप्लोर myself करने के लिए मिला ही नहीं कुछ ज़्यादा. and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. वॉल्टर. घर कहाँ गया भाई? एक मिनट. क्या? I don't know if I should even be writing this. चेयर वेयर कैसे लगी पड़ी हैं भाई पेड़ों पे? भाई मैं घर के ऊपर तो एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये बाहर क्यों आ गया मैं? Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. वहाँ कुछ है भाई बीच में. यहाँ जाके देखता हूँ पहले. अच्छा यहाँ से मैं शायद वापस घर में जा सकता हूँ. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible.
हम्म। भाई अंदर कैसे जाना है? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. उठा ले भाई, What kind उठा of ले, family अंधेरा हो रहा finishes है। building a cemetery before starting the house? अले ये उठा रही। घर में तो जा नहीं रही। अरे यार घर में वो बचा है भाई, अभी एक्सप्लोर करना। It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. भाई 3 of the पेट्स, gerbils are mine, and 2 had been my fault. पेट्स, पेट्स की सिमेट्री है ये बर्पी वर्पी लर्पी चर्पी डरपी डरपी जूनियर, ये तो चिड़िया थी उसकी, ईडी की। और इसमें बाकी है वो होंगे जर्बल्स जो ये बोल रही है। पेट्स की सिमेट्री भी बना रखी है भाई, क्या बात है। क्या मेंढक, मेंढक की सिमेट्री 1959 to 1972, काफी बड़ी सी बना रखी है भाई इसकी। Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. मॉली फिंच। अच्छा ये सबका वो ये दिखा रखा है भाई, बिल्ली मॉली को दिखा रखा है, कैल्विन को ये क्या दिखा रखा है। स्वेन फिंच कारपेंटर था भाई, देखा। ईडी फिंच बुक लवर थी। वॉल्टर ये क्या है? ओ वॉल्टर ये रहा छोटा सा। बारबरा फिंच, इसको फेमस होना था। I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. ये Odin, She could see it poking out of the water at low tide. लगता है मुझे वहां भी जाना है भाई, लाइट जल रही है वहां पे। Edie said she dreamed about the old house every night. ओ पुराना घर है भाई ये जो डूब गया था इनका। Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. ग्रेगरी, सैम और गुस के भाई थे गए तीनों, क्या सीन। इन तीनों की स्टोरी पता नहीं लगी ना अभी। She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. मिल्टन, संजय कुमार। अरे संजय कुमार यहाँ कैसे पहुंच गया भाई?
भाई साहब संजय कुमार आ गया भाई। We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. अच्छा यहाँ ऊपर से एंट्री लूँगा मैं शायद। But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. प्रेग्नेंट? अभी इसने अपने आप को 17 years old बताया था ना शायद। कहाँ से आना? OCD। I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. ग्रैंडपा था भाई इसका, सैम जो है। चलो भाई ऊपर आ गए करके। They were both pretty intense. भाई साहब भाई म्यूजिक चेंज हो गया एकदम। Sam spent his life serious। shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. हंटर था भाई सैम। सैम है ये। सैम है कौन था वो? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? ओडिन फिंच ट्रेल मैप भाई साहब उसके नाम का। I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Wait, Smile, blur, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, अच्छा I'm ये not always gonna be here, Dawn. You'll डॉन need to चला रही है remember भाई this stuff कैमरा। if you want to survive. I'll be fine, Dad. मुझे You know लगा who else thought he वो was gonna be खींच रहा है Some guy सैम। who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. भाई कैसा कैमरा है भाई? Last Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? क्या खींचूं? Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire.
found an old logging trail. There were deer everywhere. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, अब सैम खींच रहा है ये एड ऑन. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. ब्लरी हो रहा है भाई. एक मिनट. ठीक है क्या? Keep yourself squared up. Elbows. Great shot, Don! डॉन को पसंद नहीं था भाई ये हंटिंग. किधर हुआ? I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally some- normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! अरे भाई ऐसे मरा ये सैम भाई. Of all these stories, गलत ही that's मर the रहे हैं one भाई I ये wish लोग most इसकी that my फैमिली के mom had बंदे. told me. भाई साहब. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. सोल्जर वोल्जर था कि एक मिनट. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Pinch control. ग्रेगरी पे आ गए भाई. डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny सैम was और happening, के but का only he could डिवोर्स see हुआ it. शायद. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. तो गेम बन गया भाई. What his world was like.
reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. वेल को नीचे. It sure made him happy. हाँ. सीधा करो भाई, सीधा करो वेल को. उन दोनों की लड़ाई चल रही है भाई. सैम और उसकी. हो गया भाई, सीधा हो गई वेल. अरे 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 अरे, ये क्या? I know how silly it sounds. लो भाई, बुबल I'm बात. worried about a baby being too happy. I can feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. अरे यार, सारा पानी निकाल Called दिया. that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. अरे भाई लेगो. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. अच्छा, अरे भाई ग्रेगरी 1 साल में मर गया. 1976 to 1977. अबे मेरे ख्याल से जब उसकी मम्मी चले गई थी ना बात करने, केल चले गई थी सैम से बात करने दूसरी बार, तो जो मैंने पानी जो ऑन करा तो पानी भरता हुआ चला गया और ग्रेगरी वो पानी में ही डूब के मर गया शायद. ऐसा हुआ होगा, मुझे तो यही लग रहा है भाई. भाई साहब बड़ी ही गंदी मौत मर रहे हैं भाई ये फिंचेस. एडिथ की भी बारी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, एडिथ सॉल्व करेगी ये सब, पता नहीं भाई. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. बस भाई इसका हेयर स्टाइल देखो भाई साहब, मोहॉक. ग्रेगरी, गस और डॉन. डॉन का कुछ नहीं रखा भाई. पतंग पतंग बाजता A भाई. poem for Gus, who पतंग always बाजता said the शायद. wedding was a bad idea. गस. Our father never hit us हाँ, kids, पतंग बाजता. at least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard चलो भाई पेज that चढ़ाएंगे. he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. देख के ढील कैसे छोड़ूं.
लगता है इतनी ही रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. क्या शादी अबे शादी हो रही है भाई किसी की, और ये पतंग उड़ा रहा है यहाँ पे। ये भी ठीक है। When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. क्या बात है। Badass, badass है भाई गस। The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. भाई पतंग तो गई, इसकी बारिश आ गई। अरे भाई क्या हो रहा है, इतना सारा सामान ले गए। The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. इसकी डेथ कैसे हुई मेरे को समझ नहीं आया। क्या She मतलब? never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. क्या मतलब स्टॉर्म वॉर्म आया था उसमें गया ये गस? एक मिनट, गस इसका नहीं बाप कैसे हो सकता है भाई? अच्छा गस इसका वो होगा, अंकल होगा फिर। तो डॉन थी इसकी मम्मी, एडिथ मिल्टन और ल्यूइस की। क्या भाई क्लाइंबिंग का बना रखा है? हाँ से तो नहीं है रास्ता, क्लाइंब करना पड़ेगा। My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Holy Bible. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Don Wets Sanjay. समर बिल्डिंग हाउस इन कैलकाता भाई, कैलकाता गई थी ये। ताजमहल है पीछे भाई बैकग्राउंड में फोटो के, इंडिया का मैप। ओ भाई ये तो इंडिया घूमने चले गई थी इसकी मम्मी। देखो भाई क्या क्या लगा हुआ है। वेयर हेल्पिंग हैंड्स क्रिएट सेफ प्लेसेस।
हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हैं, ये लिखा। और नहीं पढ़ा जा रहा भाई, काफी छोटा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। प्लेसेस टू विजिट, जोधपुर, रेड फोर्ट, ताजमहल। भाई राजस्थान के फोर्ट तो फॉरेनर्स के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे ही होते हैं, ये तो मैंने देखा है। लो भाई, संजय की फोटो देखो भाई, संजय को फॉरेनर मिल गई भाई, क्या बात है। संजय की स्माइल, थैंक यू। ये कैसे चैटी वैटी करी थी क्या? टू डू, बाय स्कूल बुक्स, गेट न्यू सूटकेस। हाँ भाई साहब, ये बढ़िया लगी मेरे को ये फोटो, डॉन और संजय, क्या बात है। My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. ओह, ऐसा क्या? Lewis was born a year later. तो मतलब सबसे पहले ल्यूइस आया ना, ल्यूइस सबसे बड़ा है इनमें When my dad शायद। died, I don't think Mom knew where else to go. इनमें डैड डाइड, अच्छा तो उसका डैड जो है, संजय जो है, वो पहले मर गया। I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. मिल्टन, ल्यूइस और एडिथ। डॉन, डॉन का तो पूरा खाली है भाई। The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. भाई पर कितना बढ़िया है भाई, यहाँ पे आराम से, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे आराम से लेटो और भाई अपना खाते पीते या बुक पढ़ते हुए, यानी इंटरनेट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, बुक पढ़ते हुए या कुछ पढ़ते हुए अपना आराम से मौज मारो। वेकेशन के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है। And for a while, things were good. Almost normal. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अरे भाई पहाड़े। But it didn't last. ओडिन फिंच, मिथ, हिस्ट्री। एक मिनट, ये एडिथ का कमरा है क्या? लग तो रहा है भाई, एडिथ एडिथ लिखा हुआ। To teach and to learn, 7 ways to create a fulfilling classroom, Don Finch. Scientific method. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. अच्छा, ये मिल्टन का है क्या? After Milton disappeared, the only thing he left behind was a Oon? room full of paintings. नीचे क्या पड़ा? पेंट है क्या? एक मिनट, इधर क्या?
पेंट ही है ना, ये लग तो पेंट ही रहा है भाई, ब्लैक I एंड think वाइट Edie कर was रखा है happy to सब। finally have another painter in the family. ये लिफ्ट है। मिल्टन, मिल्टन वो लड़का था जो शायद खो गया था, है ना, डिसअपियर हो गया था। इसका भाई। Milton Finch in The Magic Paintbrush. अरे भाई, क्या बात है। I मिल्टन। was 4 when Milton disappeared. ल्यूइस की फोटो क्यों नहीं बनाई? ल्यूइस का कमरा नहीं मिला क्या मेरे को अभी? कौन बच गया? ल्यूइस, डॉन, ईडी। ईडी कैसे बच गई भाई? ईडी के कमरे में तो मैं था। ये क्या हुआ? कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? डॉन का तो बेड गायब था भाई, तो वहां पे। क्या नहीं जाना है? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. म्यूजिक Whatever Milton भाई। had found in the house, Mom didn't बढ़िया। want it getting out. अच्छा, और ऊपर है भाई अभी। चल चल। Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Lewis. Everyone always told me अरे to stay out of भाई। Lewis's room, except Lewis. भाई ल्यूइस का क्या है ये? मरुआना वरुआना भाई क्या है लगा रखा है ये? पार्टी, पार्टी वाला बंदा था क्या ये ल्यूइस ज्यादा? भाई एक मिनट, बोट है ये? इतनी ऊपर क्या कर रही है? और भाई हुक्का भी लगा रखा है। Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. ओ भाई गेम भी खेलता था भाई बंदा, ये प्ले वंडरलैंड टर्बो। Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January,
shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily अच्छा ये life. ल्यूइस है कैंट्री में काम कर रहा है. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Yeah. wander. Oh. I asked him to describe it. He said he started small, भाई मुझे मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है. imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. ये क्या भाई? And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. लुइस टोपिया. और मछलियाँ कहाँ से आ जा रही हैं भाई He इसके built the गेम city up में? slowly, brick by brick. गेम सही लग रहा है. Then he made एक मिनट musicians. आग लगानी है क्या? And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished.
he held an election for mayor. And he won. भाई ये देखा मारियो रेफरेंस था ये। मारियो में जब स्टेज खत्म होता था तो कूद के फ्लैग ऐसे नीचे आता था। बढ़िया भाई। They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. New Louisville, क्या बात? St. Louis. नाम देखो भाई। He started drifting away from our reality. ये एशिया पहुंच गया। Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. कौन है? इसकी मम्मी है क्या? In Louisburg, he heard rumors of a... ये क्या है? Beautiful prince, handsome queen. क्या इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को जो चाहिए या मैं हूँ जो? कोई हिंदी लिखी हुई है, ये क्या है? Queen blue. Handsome queen. हिंदी लिखी हुई है भाई वो पेपरों पे। The queen was on her own quest for... अबे भाई मैंने क्वीन सेलेक्ट कर लिया, इसने मेरे को क्वीन बना दिया। अरे भाई मुझे लगा क्वीन दे रहे हैं ये मेरे को। Radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. सब गायब हो गया। अच्छा कोई नहीं तो मिल रही है मेरे को, चाहिए तो है। He knew the world was all in his imagination. अरे 3 दिन से गए। भाई तू ज़्यादा मछली नहीं दे रही है। He was so proud of having created it. In his own eyes, he became something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of the Golden Palace. Oh, ये reality और अपने fiction में हो गया था। My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. क्या वो शिफ्ट खत्म हो गई? He began to forget the world we know.
I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. अच्छा वो है Lewis. He began to despise the man with a royal contempt. Finch. मैं कौन हूँ? जाना कहाँ है? वहाँ जाना है क्या? एक मिनट में मछली बना रखा है क्या मेरे को? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. जब मछली नहीं मेरे ख्याल से मैं अब ल्यूइस का कैरेक्टर बन रखा हूँ जो सोच इमेजिन कर रहा था वो शायद including the wise Calico who had insisted on advising me. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. मछली बन रखी है मैं यहाँ पे भी ये क्या है भाई ये बच्चा रखा भाई तुमने सजा दे रहे हो And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. अब कौन बचा डॉन और ईडी ना On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. अब शायद डॉन का दिखाएंगे I wish we'd stayed. Missing. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind.
What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. एडिथ लिखा हुआ है भाई दीवार पे. But it had to end one way or another. All that's left now is एक to tell मिनट. you about that last night. ये है क्या एडिथ का कमरा? ये देखो भाई, ये टॉय टॉय स्टोरी का उसकी याद दिला रहा है मेरे को. क्या नाम था, मैं नाम भूल गया भाई. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. अच्छा, तो शायद मेरे को वो चेक करना है जो ईडी ने बोला. क्या बोला था? कुछ तो रखा है ना सामान हॉलवे में. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. इसको सुनाई दे रहा है भाई यहाँ से उनकी बातें. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finches by Edie Finch. बार-बार एडी पढ़ लेता हूँ भाई. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. ईडी की स्टोरी है ये. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ अब? God, वहीं it जाना भाई. smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. बहुत बढ़िया. I got turned around. For a while,
I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. आ गए भाई. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. वो खड़ी ईडी. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a अच्छा. lot. वैन आई पर उनको ईडी नहीं मिली भाई. We both tried to make the best of it. क्या बात है. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. अब इसकी मॉम गई है. Dawn Finch. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. किसकी बात कर रही है? But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. ओह, ईडिथ भी गई. और ये कौन है? ईडिथ का लड़का? हाँ, पर ईडिथ प्रेग्नेंट थी ना, ये बोल रही थी 22 वीक्स करके बोल रही थी शायद. अरे भाई, ईडिथ भी गई. भाई तो ये फिंचेस को भाई कोई कर्ज है भाई. देख रहे हो, ये जितने भी लोग टीम में लोग थे उन सबके बचपन की फोटो लगा रखी है इन्होंने.
भाई साहब पूरी लाइन खत्म हो गई भाई। मतलब लाइन क्या खत्म हुई, अभी ईडिथ का लड़का भी है शायद। ईडिथ का, मेरे हिसाब से तो ईडिथ का ही लड़का है वो, बाकी पता नहीं। भाई स्टोरी तो बड़ी, एंड में मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, पता अभी जब ट्रांजिशन आया था एडिथ वाला। सी जोहान्स नेम इन द एंडिंग क्रेडिट्स। भाई गेम तो बढ़िया थी, छोटी गेम थी पर बढ़िया थी। तो मिस्ट्री मिस्ट्री दिखाई है भाई। स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, धीरे धीरे समझ में आया। अन्नपूर्णा, भाई अन्नपूर्णा वाले काफी भाई बढ़िया बढ़िया गेम निकाल रखे हैं इन्होंने। मैंने इनकी आउटर वाइल्ड्स भी खेली थी और भी इंडी गेम्स खेल रखी है मैंने इनकी। भाई सबकी बचपन की फोटो डाली है इन्होंने, सबकी। प्ले टेस्टर्स की नहीं डाली। इन लविंग मेमोरी ल्यूइस फिंच। अच्छा ये तो वही रेफ्रिजरेटर है, 2012 टू 2017। अच्छा ये इनका फेज होगा, इन्होंने 2012 से 2017 में ये गेम बनाई है शायद, दी एंड। क्योंकि 2017 को ही लॉन्च हुई थी ना ये गेम। द रिप्ले अ स्टोरी ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल, सेलेक्ट एडिट टू प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा क्या स्टार्ट होगी क्या ये अगर मैं प्ले करूंगा तो? हाँ भाई तो स्टार्ट हो रही है। ईडी और डॉन की भी फोटो लग गई भाई। बढ़िया भाई, बढ़िया गेम थी, मजा आया। चलो भाई तो इसी के साथ यहीं एंड करते हैं भाई आज की स्ट्रीम। फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में एक गेम है, सोचा तो था मैंने शायद उसको खेलूंगा। पुरानी गेम है, नई गेम नहीं है, तो शायद देखता हूँ, शायद उसको ही खेलूँ।
बाकी देखते हैं मूड के ऊपर है। चलो भाई, तो यहीं खत्म करते हैं इसको। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में फिर, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, कल खेलते हैं कोई नई गेम। बाय बाय।